So hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you're all doing great, and I'm doing great too actually. You know what? बाइक खरीदने से पहले कुछ एक चीज़ ऑर्डर दिया था मैंने, जो कि लूविया इंडस्ट्रीज से था. एंड गेस व्हाट, आज वो पैकेट आ गया. आई फाइनली रिसीव द पैकेज. एंड मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगा, मैं बता ही देता हूँ आपको क्या क्या मैंने मंगवाया है. So I had ordered the windshield from Lluvia, the I think what the totally tinted black one. उसके साथ था number plate holder, and then there was this footrest for left and right both, and oh yeah, handlebar raisers. But bike चलाने के बाद I don't think I will be needing handlebar raisers right now, but I'm definitely gonna install the windshield and the number plate holder. And I'll try to install the foot pipe. देखते हैं, I don't know कितना तक हो पाएगा. I'll try my best. अगर नहीं हो पाता है तो मैकेनिक जिंदाबाद. बट पैकेज आ गया है, क्या आपको देखना है? तो पैकेज मैंने खोल दिया, आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है. So, footrest, left and right. Handlebar raisers, 1-inch pro version. Height adjustable windshield के brackets. And nuts and bolts. Number plate holder. And ये सब के साथ, oh yeah, Lluvia का windshield. So the right side and the left side के footrest, the height adjusting clamps, windshield, number plate holder and handlebar risers with all the accessories. Partial assembly के बाद कुछ ऐसा दिखता है. This is how the number plate will go, and this is how I've attached the bracket. Actually अभी मैंने कुछ टाइट वाइट किया नहीं है, just fit करके रखा. So I'm not planning to actually remove my original windshield wipe, so उसके ऊपर इसको लगाऊंगा, which is why I have attached it on the highest level of adjustment. And अब आगे देखते हैं बाइक पे लगा के कैसा लगता है. तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये वाला स्क्रू ड्राइवर सेट, जो कि बाइक के टूल बॉक्स के साथ आता है. फिर हम लोग अनस्क्रू करेंगे ये 4 स्क्रूज़ को. तो ये 4 बोल्ट्स मैंने खोल दिए. एंड दिस इज़ द स्टॉक नंबर प्लेट होल्डर. एक्सक्यूज़ ऑल द डर्ट, आई लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, तो मेंटेनेंस कम ही होता है. एनीवेज, so the windshield has been removed. ये रबर माउंट्स केयरफुली रखने हैं आपको. इनके साथ प्लास्टिक वॉशर्स आते हैं बोल्ट के साथ. हर बोल्ट कौन सा लोकेशन में था वैसे ही रखा है मैंने. एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, दिस इज़ द स्टॉक वाइजर एंड द लूमिया वाइजर. A side by side comparison, that is almost a double. So after installing the windshield and the number plate holder at the topmost adjustable position, this is how it looks. I have used the original windshield over there, and I mounted the clamp and it's set on the highest position, and this whole windshield with the number plate holder has been adjusted on top of it, or else you would have left an empty gap. And this is the view of the cockpit. And this time I have readjusted the whole windshield on the lowest adjustable point, mounting it on the original visor.
थिंग इज़ लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल वाइज़र लगाने के बाद लूविया विंडशील्ड का जो लोएस्ट एडजस्टेबल पॉइंट है वहाँ पे आप फिक्स करोगे तो यहाँ पे अटकता है। वेल बॉस, लोएस्ट एडजस्टेबल पॉइंट पे लगाया हूँ, विंडशील्ड पे लग गया है। थिंग इज़ आप जब सोच रहे हो कि ये वाला विंडशील्ड आप यूज़ करने वाले हो, उसके साथ ये वाला विंडशील्ड आप यूज़ करोगे, यहाँ पे एडजस्टिंग जो 2 पॉइंट्स होता है अपर एंड लोअर, यहाँ पे है अपर का, यहाँ पे है लोअर का। लोअर पे मैंने यूज़ किया है। क्या है, इसको थोड़ा ढीला देके पहले इसको बिठा लो, उसके बाद टाइट करो, देन यू विल बी गुड टू गो। सो लूविया विंडशील्ड डन। So on a Dominar 400 you get these kind of passenger footrests. Now you can see there, that is the lock nut. Actually it's just a lock, pin lock. You have to remove the pin and remove the bolt. This whole thing comes out. See, so there's a ball that slides in the spot. The passenger sits, the foot is like this, so most of the time the foot falls on this area. If you can see this mark over here, that is coming from the foot that is resting. So what I'm going to do is I'm going to fit this Lluvia foot peg over here. Yeah, that's going to protect my exhaust as well. तो फ्रेंड्स, लग गया है फुटरेस्ट, बहुत स्टर्डी है। यहाँ पे इसका एक बोल्ट लगता है, ये वाला ओरिजिनल बोल्ट जो है चेंज हो जाता है, देखिए। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे बोल्ट लगा है, ये एक छोटा सा ओपनिंग रहता है जहाँ पे एक एडजस्टमेंट मिलता है, वो भी लगाना पड़ता है। एंड आप देख सकते हैं कितना फुट प्लेस मिलता है। सेम चीज़ लेफ्ट पे भी किया गया है। दैट्स अ लॉट ऑफ फुट स्पेस। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसके कारण क्या हुआ, मेरा एग्जॉस्ट पूरी तरह गार्ड हो गया।